हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज हमारे पास है कार्बन का K9। इसमें चार्जिंग इशू है तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको इजीली मिल जाए। देख सकते हैं इसमें चार्जिंग ट्रबल है, वोल्टेज वगैरह कुछ आ नहीं रहा है। तो इसी के लिए हम सॉकेट को रिप्लेस करने जा रहे हैं। चलो करते हैं। गाइस मैंने इसके बोल्ट पहले ही खोल दिए हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने। सबसे पहले तो हमें सॉकेट चाहिए होगा। ओके गाइस, तो ये चार्जिंग सॉकेट है, हम इसी को इस पे सेट करेंगे। गाइस हल्का स्क्रैच करना ना भूलें। इस पे एक परत आती है जो सप्लाई को रोक देती है, तो हमें उस परत को हटाना पड़ता है। सॉकेट को अलग करना होगा। ओके गाइस, सॉकेट तो अलग हो गया है। अब हमें न्यू सॉकेट इस पे बिठाना है और इसकी प्लेट थोड़ी डैमेज है तो हम इसे पहले सही करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है नहीं। ये गाइस सपोर्ट्स हैं इसके, तो हमें पहले इसे बनाना होगा वरना सॉकेट इस पे स्ट्रांगली लगेगा नहीं। सपोर्ट के लिए हम सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। आयरन से इस पे सपोर्ट डाल देंगे। ओके गाइस, तो हमने सपोर्ट डाल दिया है जिसकी वजह से सॉकेट अच्छा सेट भी हो जाएगा। अब हम दूसरा सॉकेट इस पे सेट करेंगे। ओके, हमारा सॉकेट अच्छे से सेट हो चुका है।
इसके प्रिंट सेट करने के लिए गाइस आप पतला आयरन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज बैटरी कनेक्टर जल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है। प्रिंट इसके अंदर है गाइस, तो ये थोड़ा जूमिंग ले नहीं पा रहा है। प्रिंट अंदर है जो अच्छे से सेट कर दिए हैं हमने। अब हम चेक करते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। ओके गाइस, ओके गाइस, तो हमारा चार्जिंग रेडी है। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।